my screen visible, guys? Yeah. Yes, it is. Okay. So I welcome you to this workshop sessions, and it will be about introduction to image processing and computer vision. In this particular meeting, we will be discussing of where it's useful to us and to give you a basic introduction, to get you interested in the whole topic, and we'll take up the more difficult concepts and all those sort of things. Let's not say difficult concept, the more involved concepts in the next lectures. So yeah. So how many of you guys have done image processing before or used it before somewhere? You can tell in the chat box so I get an idea of where are you guys, and yeah, you can tell about your experiences before. That way I'll be able to more will be able to help better and answer present better basically. No, okay, cool, no issues. Just the basics. Okay, cool. Okay. Okay. So you guys are all new. Cool, cool. Nice. So let's see. So these are like, let's get the hang of it. And to get the hang of it, these are the images that we use every day almost. And most of the time, we don't really know what's going on behind them and what the details they hide. So in this particular series, we will be just discussing about the details those images hide, what information we can extract from those images, and other image processing related concepts, and where we can use it in computer vision. And after that, moving on to that, how we use the classical image processing in machine learning. I'm not really sure we should jump to machine learning directly, but we'll stick to the concepts of image processing first. And how many of you guys have used any of these frameworks like OpenCV or Scikit Image or Julia Images? I have. No issues. Okay, okay. So have you guys used, which frameworks have you used? Can you give me an idea about it so I can yeah. I have used NumPy, Panda, sklearn. Okay, so those aren't really image processing based, right, Ramandeep? Those are for working with arrays and data frames, and you told about sklearn, which is for machine learning, I think. But I think we can do image processing in sklearn too. Okay. So moving on to the next part, let's start with the very first question. What's an image? So basically, there's a real world, and we want to depict it on a 2D image, two-dimensional or three-dimensional frame. So it's basically an artifact, often physical object, which we create ourselves. And basically, in terms of signal processing sense, it's basically a distributed amplitude of colors. So what I mean by that, so as you can see my face right now, and it's just basically an image of me being in a 3D. So I'm right now sitting in 3D, but my image that's being created is in 2D. So in that particular image, there are like a lot of colors in it. So how is it showing you guys those images of me? So what it's doing is from 3D, it converts it to 2D, and that small image that you are seeing has pixels, and those pixels each has a value that tells the computer which color to show. You guys get that point? Okay. So moving on to the next part. So that's how we depict those images. We can convert it to, there are like mainly two forms of images that we are interested in the RGB and grayscale. Do you guys know the difference between RGB and grayscale images?
Yes. Okay. So RGB images are these kind of images could be called as RGB, which has red, green, and blue, and they're basically a mixture of them. And something like these kind of images are grayscale images, which are basically the hues of whites and blacks, mainly in that range, white to black, and in middle of that with all sort of grays in it. So those are the two types of images that we're mainly interested in. And now moving on to the next part that we have is there is a difference between analog image and a digital image in the way that a digital image is different from analog, which is usually like in the photographs, the hard coded photographs that we have, and these are digital images. And okay, so in these digital images, as we talked about, we have pixel each storing the data of which color to show. And depending on the resolution, there are two types of images: vector image or raster image. So you guys must have used JPEGs and PNGs and SVGs. So there is a very basic, there is a difference between them. So for raster images, let me show you guys. So these JPGs are mainly raster images. So there is a size limit to them. And if we suppose we keep zooming into them, their quality gets distorted. So like there is a very defined number of pixels to them, 850 and 478. But in SVG images, what we do is SVG images are basically vector images, and these JPEG PNGs are mainly raster images with finite elements. And vector images, what vector images are, so they don't store like the color of each pixel, they store the mathematical paths. So let me show you. So suppose we have this image of Stitch. So its SVG version stores data differently. So let me show you the data that the way it's storing. If you open it in Sublime Text, it will show up a XML file which has paths. Okay, so it's full of paths, and what do those paths mean is that, wait a sec. So you can see these segments in it. So what those paths define is कि सपोज जो सबसे ऊपर वाला पाथ है वो पिक करते हैं हम लोग, उसमें पाथ डिफाइन कर रहा है कि कोई भी कैनवास है हमारे पास एक कोई भी 400, अगर हमने 400 into 400 सेट किया, दैट आल्सो वर्क, 1200 वर्क्स आल्सो. सो अगर उसमें साइज हमने सेट एक कैनवास बनाया हमने, फिर उसमें हमने जो ये पाथ है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ एक लाइन बनाओ, पहले तो बाउंड्री बनाओ, देन उसके अंदर एक कलर फिल करो विच इज डिफाइंड बाय दिस हेक्स कलर नंबर, हेक्स कोड. So it's not really dependent on the size of image, like there is no finite limit to it. And in raster images we have a very finite limit, and if we like zoom it out too much or rescale it, the quality gets distorted. Vector images की quality distort नहीं होती है कभी भी. And अभी next question हम discuss करेंगे कि how we can convert to raster to vector. Moving on to the next part that we have is, so have you guys ever tested what are the properties of an image are? Have you guys like tried to read up on like the properties that an image usually has? Moving on, so the format it's provided is in JPEG right now. There are like multiple formats that are used these days for raster images. We have JPEG, PNGs, and JPGs. So what these formats are, basically they are compression methods that were developed in old times, like 1970s of sorts. So what they are very good at is storing that image data in a very compressed format. So if I show you this JPG format, it stores the data in 102 KBs. And if I show you a different version of it, where's the PNG version of it? Wait a sec.
So it's relatively bigger than the different version. So next thing, that image usually has its width and height and the other metadata related details. So let's now see if what we can kind of get a hint into the size of an image. So suppose we have this jellyfish image, and this image का size हम मान लेते हैं it's like 300 into 168 है. Uh, we have this size, and it has like 300 into 168 pixels for it. So we have the array. So for the first line we have 300 pixels, then for another 300 pixel, 300 pixel, and each pixel stores three values, which are the RGB values in this RGB image. So as we can get a hint into that, each pixel usually stores three data, and those three data involves the details of RGB colors, and each color holds the details of 0 to 255, holds at 0 to 255 value. So we can pretty easily calculate the size of the image that we are having outside of the program with these details. You can check this. And but so this image that we are right now using is a PNG format image, and the image that we you have after the compression from JPEG goes down by 40 times. So these compression methods are need to be chosen depending on the use case. But there are some methods that are lossless. There are some methods that are lossy. Okay, moving on to the next slide. So you guys know something about images now. So now we get a hint into, we want to know about what's digital image processing. So digital image processing is basically to use a digital computer to process a digital image through an algorithm. So those algorithms could be for various different types of tasks and subfields. And there are multiple libraries for image processing in Python, Julia, and MATLAB. And those subtasks that we want to solve could be like, सपोज जो भी अभी मेरी इमेज आ रही है उसमें क्या तुम डिटेल्स ढूंढ सकते हो, या एक चीज तो ये ढूंढ सकते हो मेरी आउटलाइन क्या है, मेरा फेस डिटेक्ट कर सकते हो, मेरे आर्म के लैंडमार्क्स डिटेक्ट कर सकते हो, एज डिटेक्ट कर सकते हो, और क्या कर सकते हो तुम लोग इस इमेज के साथ, इमेज की क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हो, एंड या इमेज को रोटेट कर सकते हो, क्रॉप कर सकते हो. All those things, they all are part of algorithms that we have. Each of those problems require an algorithm, and जितने भी libraries होती हैं वो इन्हीं problems को solve करने के लिए algorithms provide करते हैं mainly. Okay. So there are multiple applications of image processing, and why we study those image processing. First is definitely image restoration. So there's like an old image that we have from, like, let's say 1870s. So how would you convert that image to much better quality in today's time? So पहले वो बेसिकली इमेज प्रोसेसिंग का पार्ट आ जाता है. जैसे उसमें इमेज में कुछ नॉइस है, उसको रिड्यूस करना वो इमेज प्रोसेसिंग का पार्ट आ जाता है. अगर उसमें हमें उसका साइज, मतलब कुछ साइज के इश्यूज हैं वो फिक्स करने हैं, वो हम इमेज प्रोसेसिंग कैसे करेंगे. अगर उसमें कुछ जैसे फट गया था, सो अगर हमें उसे फिक्स करना है तो वो भी इमेज प्रोसेसिंग के थ्रू होगा. ओके, इमेज प्रोसेसिंग एग्जांपल ही हो गया. रोबोट विजन क्या हो गया? सो सपोज ड्राइवरलेस कार्स, रोबोट विजन इज द सेम थिंग. सो अ रोबोट इज basically seeing through those camera sensors. So what that robot is doing is it gets that data from that camera, and it processes it and finds useful information in it. So we have driverless cars. So it has sensors, and those sensors provide the information of all that is in its vicinity. So it creates basically a 3D map of its surroundings, and basically stitches those images that it has, and then finds out the features in those images. So suppose we have अगर हम जो हमारी कार है वो ड्राइव एक लेन में जा रही है. So first problem तो क्या होगी?
कि वो उस लेन को डिटेक्ट करना चाहेगी। देन वो डिटेक्ट करना चाहेगी कि कार्स कहाँ-कहाँ हैं। देन वो डिटेक्ट करना चाहेंगी कोई साइंस तो नहीं आ रहे हैं रोड पे। सो सपोज देयर इज अ लेन एंड उसके जस्ट ऊपर ही वहां से एक वो स्टार्ट होता है काइंड ऑफ ट्रैफिक पोल स्टार्ट होता है, तो हमें वो डिटेक्ट करना है। पहले तो हमें लेन डिटेक्ट करनी है, देन उस ट्रैफिक पोल को डिटेक्ट करना है, देन उस ट्रैफिक पोल पे 3 कलर्स हैं, उनमें से हमें जो अभी राइट नाउ चल रहा है वो कलर डिटेक्ट करना है एंड जो उसमें टाइम आ रहा है वो डिटेक्ट करना है। ये सारा का सारा इमेज प्रोसेसिंग का पार्ट हो गया एंड देन वी हैव दोस ऑब्स्टेकल्स दैट वी हैव। वी वांट टू डिटेक्ट कि कार्स कहाँ-कहाँ हैं, देन उनका डिस्टेंस क्या-क्या है। ये सारी जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो इमेज प्रोसेसिंग के अंडर आ गए हैं। ओके, देन वी हैव मेडिकल इमेज प्रोसेसिंग एंड medical imaging and solutions related to the diagnosis. So suppose we get MRI images, उसमें सबसे कॉमन इशू क्या होता है कि उसमें नॉइस का इशू आता है। नॉइस के जो फिल्टर्स हो गए वो हमारा प्रोवाइड कर इमेज प्रोसेसिंग के थ्रू ही सॉल्व होंगे वो प्रॉब्लम्स एंड देन वी कैन फाइंड द ट्यूमर बेस्ड अपॉन इट्स कलर। सो सपोज let me give you an example of this. I mean, it's not related to medical image, but slightly it gets close to it. So suppose this image is, you are seeing. So मेरा हाथ दिख रहा है तुम लोगों को. So अब इसे तुम कैसे डिटेक्ट करोगे? You guys have any idea? मतलब है तो बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। So क्या करेंगे हम? तुम्हारे पास एक इमेज आती है, 2D इमेज आती है और 300 into 200 पिक्सल्स की आती है। Then what we can do is हमें अपनी स्किन का कलर डिटेक्ट करना है, तो स्किन के कलर की एक रेंज है, ठीक है। सो हम क्या कर सकते हैं, एक थ्रेशोल्ड कर सकते हैं कि हमें इस कलर रेंज से इस कलर रेंज के कलर्स को हमने सेपरेट आउट करना है। तो उससे क्या होगा कि सेपरेट आउट क्या क्या चीजें होंगी, जो भी बैकग्राउंड आ रहा है व्हाइट वाला वो सारा गायब हो जाएगा, मेरे ब्लैक क्लॉथ्स गायब हो जाएंगे मेनली, एंड जो मेनली डिटेल्स बचेंगी वो मेरा हाथ बचेगा, मेरा फेस बचेगा, क्योंकि उनके कलर सेम है, दे आर बेसिकली ब्राउन स्किन कलर। अब उसके बाद प्रॉब्लम सो देन उसके बाद वो प्रॉब्लम आ जाती है कि हम उस फेस को कैसे रिमूव करेंगे, वो एक डिफरेंट प्रॉब्लम हो जाती है, दैट वी कैन सॉल्व लेटर। बट अब सिमिलरली हम क्या करना चाहते हैं कि मेडिकल इमेजिंग में कहाँ यूज होगा। अब सो हमारे पास एक ब्रेन की इमेज आती है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं ट्यूमर है एंड उसके भी एक कलर की एक रेंज है। वी कैन थ्रेशोल्ड इट एंड फाइंड गेट अ बेसिक हिंट इनटू वेयर दैट ट्यूमर इज। हमें पूरा आइडिया नहीं लगेगा, but we can get a hint into it. Pattern recognition. So pattern recognition is, how do you do the pattern recognition? Think about it. So suppose we want to detect like a 1 in an image. Let's say pattern recognition क्या कर सकते हैं, hand tracking वाला example ही दोबारा पिक करते हैं। So हमारे पास एक hand है and suppose we want to detect 1 or 2 in it. So अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है पैटर्न रिकग्निशन का, कि हम डिटेक्ट करना चाहते हैं 1 कब किया है हमने, 2 कब किया है। सो हम उसका कैसे कर सकते हैं डिटेक्ट। देयर इज लाइक अ डिफरेंस इन बिहेवियर ऑफ द इमेज। मान लेते हैं मेरा फेस नहीं है इस इमेज में एंड जस्ट मेरा हैंड डिटेक्ट हो रहा है, तो उसमें एक फीचर ऐसा है जो हमारे 1 को और 2 को डिफरेंशिएट कर रहा है। वो क्या फीचर है कि मेरा जो एक कॉन्वेक्सिटी, यहाँ एक कॉन्वेक्सिटी डिफेक्ट क्रिएट हो रहा है, जो अगर मैंने 1 किया हुआ है तो यहाँ कोई डिफेक्ट नहीं है, and in this case we have a defect that separates out this 1 and 2. So if we can detect these convexity defects, then we can say this is 1 or this is 2. Okay, this is a very basic example, but we can talk about it later. So video processing की बात करते हैं। video processing कैसे होगी। सो वी हैव वीडियो MP4 है हमारे पास या फिर AVIM होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेसिकली उनका या जिफ भी है। जिफ भी बेसिकली एक स्टैक है इमेजेस का, कि मतलब एक इमेज होगी उसके पीछे बहुत सारी इमेजेस रखी हुई है, उसका फ्रेम रेट है कि 25 फ्रेम रेट है, तो उसका पॉइंट क्या होगा कि 1 सेकंड में 25 इमेजेस हैं एंड वो 2 घंटे के लिए वो 25 इमेज इनटू 2 आवर्स मल्टीप्लाई कर लो। सो वो इमेजेस हैं बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे। देन जो भी उनमें इमेजेस में प्रोसेसिंग होगी, उसमें इमेज प्रोसेसिंग कैसे लगेगी। जो फ्रेम है
फ्रेम तो 2D आएगा हमारे पास। अब हम उस फ्रेम पे तो इमेज प्रोसेसिंग लगा ही सकते हैं। सो उसमें क्या हम कर सकते हैं, एक इमेज आ गई हमारे पास फ्रेम्स में, सो हम उसमें ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ट्रैक कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं हम, फीचर्स डिटेक्ट कर सकते हैं कि सराउंडिंग्स क्या है। एंड नेक्स्ट थिंग वी हैव इज द 3D रिकंस्ट्रक्शन। सो 3D रिकंस्ट्रक्शन इज, सो सपोज राइट नाउ यू आर गेटिंग माय फेस, राइट? अभी तुम्हारे जो 3D वर्ल्ड था उसे 2D वर्ल्ड में मेरी इमेज तुम्हारे पास जा रही है, ठीक है? अब एक प्रॉब्लम आ जाती है कि हम इस 2D इमेज को 3D वर्ल्ड में दोबारा लेके जाना चाहते हैं। थिंक अबाउट इट। सो अब ये कैसे होता है? इज अंडर द पार्ट ऑफ 3D रिकंस्ट्रक्शन। इसका हम डिस्कशन थोड़ी देर में बाद में करेंगे। एंड देन वी हैव ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड ट्रैक। इज समवन ट्राइंग टू से समथिंग? Okay. So moving on to the next part that we have. अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि इमेजेस एक्चुअली होती क्या है? यू नो, अगर हम एक इमेज एक फ्रेमवर्क में लोड कर रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे क्या होती है? दे आर बेसिकली जस्ट एरेज ओनली। सो सबने पाइथन यूज किया ना? जिन्होंने पाइथन यूज किया वो एक बार चैट बॉक्स में डाल दो, सो आई गेट एन हिंट इनटू इट। अगर मैं आगे बात करने लगता हूँ इस चीज के बारे में, थिंकिंग ऑफ इट एज पाइथन थिंग। Okay. So images are just arrays. So जैसे मैंने बताया था कि एक इमेज, जो भी मेरी इमेज आ रही है या फिर जो स्क्रीन पे प्रेजेंट है इमेज, जो भी इमेज है उसमें सपोज 300 इंटू 300 है, उसमें हर पिक्सल के में डिटेल्स स्टोर्ड हैं कि मतलब कि RGB की डिटेल्स स्टोर्ड हैं, वो सब एरेज ही हैं बेसिकली। सो सपोज वी हैव दिस इमेज एंड जिस हमारा सबसे पहला पॉइंट है उसमें RGB की डिटेल स्टोर्ड है। सो think of it as a stacked right now. So we have this image, then what we can divide it into is 3 different arrays जो stacked हैं basically. So we have this first layer, then we have second layer, then we have third layer, and जो first layer है उसमें red की details stored हैं, second में green की details stored हैं, third में blue की details stored हैं। So जो हमारा सबसे पहला pixel है basically, जो हमारा top left pixel है, उसकी details ऐसे stored है kind of as arrays में stored है, yeah. And the storage methods could be different. अभी जैसे इन्होंने क्या किया है, these are structure of arrays. There could be a different method to it which could be array of structures. उसका डिस्कशन हम थोड़ी देर में बात में करते हैं। हाँ, नेक्स्ट में है। So suppose, yeah, let's just discuss this part only from this. So what we can do is, या तो हम एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं अंदर ही कि हर इमेज की डिटेल्स एक ही में स्टोर्ड है। सो बेसिकली इट्स जस्ट अ 2D array राइट नाउ with these details stored for every pixel. So इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि 3 लेयर्स हैं, 3 अलग अलग एरेज नहीं है इसमें, 3 अलग अलग 2D एरेज नहीं है इसमें, एक सिंगल एरे ही है 2D एरे, बट हर जो भी उसमें लोकेशन है उसमें एक स्ट्रक्चर स्टोर्ड है, जैसे कि जो C++ में स्ट्रक्ट हो गया, पाइथन में स्ट्रक्ट हो गया, वैसा उस वाले फॉर्मेट में। एंड दूसरा तरीका हो गया जो हमने डिस्कस किया था कि मतलब 3 अलग अलग लेयर्स हैं। एंड जो ग्रे स्केल वाली होती है, उसमें ग्रे स्केल वाली में यही डिफरेंट होता है कि उसमें ये स्ट्रक्चर ऑफ एरेज और एरे स्ट्रक्चर का कोई चक्कर नहीं रहता, उसमें एक जस्ट 2D इमेज बन जाती, 2D एरे होती है, एंड हर एक वैल्यू की जो इंटेंसिटी होती है वो 0 to 1 होती है। वो बेसिकली डिफाइन करता है कि वो कौन सी शेड है ग्रे की बेसिकली। सो 0 इज फॉर ब्लैक एंड 1 इज फॉर वाइट। सो उसके बीच में जितने भी कलर्स हैं, मतलब ग्रेस की शेड्स हैं, वो सब आ जाते हैं। ओके, या
Now, next segment is basically taking you through all those things that I find interesting, or that walk you through those topics that we would be covering in the next part of this series mainly. So the first part is definitely how we convert a raster image to vector image. अभी तुम लोगों में से किसी को properly समझ आया कि raster image में और vector image में difference क्या है? Then only I think we should take this part up. चैट बॉक्स में डाल सकते हो, कोई इशू नहीं. ओके, सो जो रेस्टर इमेज होगी उसमें फाइनाइट एलिमेंट्स हैं, उसमें और उसकी हर एलिमेंट की हमारे पास डिटेल स्टोर्ड है. बट जो एसवीजी वाला है वेक्टर इमेज, उसमें हमारे पास रास्ता पता है हमें, बट हमारे पास उसकी डिटेल्स नहीं स्टोर्ड. सो उसकी जो स्टोरेज मेथड है वो डिफरेंट है, और हमारे पास डिटेल्स हैं कि ये पाथ बनाना है पहले, एंड उसकी उसमें कौन सा कलर फिल करना है बेसिकली. सो अब हम रास्टर से वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बेसिकली ये एक प्रॉब्लम है. इट्स अ पार्ट ऑफ इमेज ट्रेसिंग. सो सपोज वी हैव दिस इमेज, सो हम इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं वेक्टर इमेज में, जो डेटा किस तरह स्टोर कर रही है, इस फॉर्मेट में स्टोर कर रही है, रादर देन जस्ट बीइंग एन इमेज. अगर मैं इसे खोलने की कोशिश करता हूँ इसमें किसी भी टेक्स्ट व्यूअर में, इट विल जस्ट थ्रो आउट gibberish. Okay, it doesn't show throw out gibberish. So अब इसमें कन्वर्जन में क्या कर सकते हैं हम लोग, पहले लेट्स थिंक अबाउट इट. सो मैंने इसमें ऑटो ट्रेसर लाइब्रेरी यूज की थी, बट एक हिंट कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं उसकी मैं बताता हूँ. सो वी हैव अ कलर ऑफ पैलेट ऑफ कलर्स, कि हमारे पास 256 कलर्स हैं मान लेते हैं. सो हम पहला स्टेप क्या कर सकते हैं, इस इमेज को रिड्यूस करेंगे उस पैलेट में पर्टिकुलर पैलेट में. ठीक है, सो ये इमेज होगी कन्वर्ट हमारी एक पैलेट में, कि मतलब वी हैव दिस डिफाइंड नंबर ऑफ कलर्स, एंड देन व्हाट वी डू इज कन्वर्ट इट टू all those colors that we had originally to a very limited set of colors. So अब हम क्या कर सकते हैं उसके बाद, तो हम इसके बाद इसकी बाउंड्रीज ड्रॉ करना स्टार्ट कर सकते हैं. बाउंड्रीज हमने सपोज वी वांट टू ऐड डिटेल्स अबाउट दिस पार्ट इन आवर एसवीजी. सो अगर हमें ये पार्ट डिफाइन करना तो हम क्या करेंगे, पहले हमने एक आउटलाइन बनाई इस एरिया की, पूरी इमेज की आउटलाइंस बनी. फिर उसके बाद हमने क्या किया कि ये जो पाथ क्लोज पाथ से इनको ढूंढा हमने. देन उसके बाद हमने क्या ऐड किया कि उसके अंदर कौन सा कलर फील्ड है. बेसिकली बेसिक आइडिया तो यही है. बाकी उसके फिर हमें एल्गोरिदम्स और बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं. अगर इसके बारे में स्टडी करना तो इमेज ट्रेसिंग को स्टडी कर सकते हो. ओके, then moving on to the next part that we have. Okay, this is the more interesting part that we have is, like, suppose we have Minecraft खेलता तुम में से कोई? Okay, so we have this image of Stitch which is like basically 100 into 100 की image है. So हम लोग जो Minecraft players होते हैं mostly we want to like convert it to our own worlds. मतलब हमारे पास जो वर्ल्ड हो गया उसमें हम इस इमेज को लेके जाना चाहते हैं, तो हम उसकी पिक्सल आर्ट बनाना चाहते हैं. So what would be a pixel art? So we have this game and let's pick out a color. Basically we have a box here. This is just a gray random array. So अब हम इस इमेज को इस फॉर्मेट में कैसे लेके जाएंगे, मतलब जैसे मैं गेम में दिखा रहा हूँ. तो हाउ डू वी डू इट. सो ये बेसिकली 100 into 100 पिक्सल की इमेज थी, एंड ये वाली सिमिलर साइज की है. सो इट्स 100 into 100 ब्लॉक्स. सो इसमें जितने भी ब्लॉक्स जितने भी पॉइंट्स हैं वो एक ब्लॉक रिप्रेजेंट करते हैं. सो दिस स्मॉल पार्ट इज अ ब्लॉक. So let's find a pink color, pink shade, and yeah, we have this. So अगर हमने इसका कान we want to make his ear, we will be using this shade. So how do we convert it to just blocks? So जो भी pixels है हमारे पास इसमें, इस particular image में that we have. So
जो 100x100 की इमेज है हमारे पास, हर पिक्सल के हमारे पास एक कलर डिफाइंड है कि उस पॉइंट पे कौन सा कलर है। सो हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास डिटेल्स हैं हर पिक्सल में, वो हम उसका एक कॉरेस्पॉन्डिंग ब्लॉक ढूंढना चाहते हैं। सो स्टार्ट कर मतलब सबसे टॉप वाला पॉइंट है हमारे पास, मान लेते हैं बिल्कुल एंड पॉइंट्स है, कोई ये वाला पॉइंट है हमारे पास। सो हम क्या ढूंढना चाहते हैं कि ऐसा ब्लॉक जिसका कलर इसके कलर जैसा हो, सेम। So what we do is find the color differences between the color and that is in this image and the blocks that we have. We have these editors that we have. And find a corresponding block in the image. Okay. Is it still lagging? I can close the game. Yeah. Might be lagging due to it. Can you guys confirm? Okay. Let's close the game. Yeah. So do you guys get a hint into how we do this? Actually, yeah, there was a very simple 3-line answer to it. It depends on how eloquently you write a solution. Let's moving on to the next part. So the question of how you draw an image. Next up. So हमारे पास एक इमेज आ जाती है, मेरी जो भी इमेज आ रही है या फिर स्क्रीन पे जो भी इमेज आ रही है, उसमें हम ड्रॉ कैसे करेंगे? स्लाइसिंग पढ़ा है तुम लोगों ने? स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग, वो सब पढ़ा है? You guys can write in the chat box so I get a hint into it. I think C++ में पढ़ा ही होगा if you guys are from first year और second year में mostly Python से करते हैं. सर स्लाइसिंग एज इन मतलब स्प्लिटिंग ऑफ एरे वाला कुछ वैसा? हाँ, मतलब इमेज एरी है ना, सो उसमें भी ओके. सो अगर हमने सपोज ये एक रेक्टेंगल बनाना है इस इमेज में, सो हम क्या करते हैं मोस्टली, कोई ओपन क्या करेंगे हम, सपोज हम एक प्रोग्राम खोलेंगे, देन हम उसमें ड्रॉ करेंगे. उसमें करता है क्या वो, उसके पीछे क्या करता है? सो व्हाट इट डज इज, उसने एक 2D इमेज ली कि जो भी हमारी RGB इमेज है, उसको हमने उसका एक जहां हमने ड्रॉ करनी है वो एरिया बताया कहाँ का है, वो स्लाइसिंग इंडेक्सिंग वाला पार्ट हो गया. सो इंडेक्स करके वो एरिया, छोटा वाला एरिया का हमने वैल्यूज चेंज किए, कलर्स की वैल्यू चेंज की है बेसिकली. सो इस इमेज को मैंने इसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या किया होगा, मतलब मैंने वैसे तो जिम का यूज किया था, बट अगर मेरे को इसे मैनुअली करना होता या फिर मेरे को एक कंप्यूटर प्रोग्राम से करवाना पड़ता, सो इसकी जो यूटिलिटीज हैं ये सारे फ्रेमवर्क्स में अवेलेबल हैं. साइकिट इमेज भी प्रोवाइड करती है, जूलिया इमेजेस भी प्रोवाइड करती है कि एक इमेज पे कैसे ड्रॉ करते हैं. सो वो एक्चुअली वो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कैसे करते हैं, और वो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है. सो व्हाट दे डू इज, हमारे पास एक इमेज आ गई, 2D इमेज आ गई, उसकी जो 2D एरे है हम उसे इंडेक्स करते हैं. इंडेक्स करके मतलब हम इस एरिया को ढूंढते हैं, देन फिर इस एरिया के जो कलर्स हैं उनको चेंज कर देते हैं बेसिकली. एंड सिमिलरली फॉर दीज स्ट्रक्चर्स आल्सो. सो सपोज हमने सर्कल बनाना है, सब उस सर्कल कैसे बनाएंगे? सो पहले तो हमें उसका सेंटर पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा कि एक इमेज है हमारे पास, उसमें सर्कल बनाना है हमने. सो हम क्या करेंगे, पहले हमने इमेज में ढूंढना पड़ेगा कि वो सर्कल का सेंटर पॉइंट कहाँ है. सो सपोज यहाँ मैंने एक सर्कल बनाना है, सो मैं एक सेंटर पॉइंट ढूंढूंगा, देन उसके अराउंड एक रेडियस डिफाइन करूंगा, देन फिर मैं वो पॉइंट्स ढूंढूंगा जहां जहां मुझे वो कलर करना है, मतलब कलर चेंज करना है बेसिकली. सो सेंटर, देन वी फाइंड द रेडियस, एंड उसके अराउंड जो जो पॉइंट्स उस सर्कल की बाउंड्री में लाए कर रहे हैं, हम उनके वैल्यूज को चेंज कर देते हैं बेसिकली. सिमिलरली इसमें जो टेक्स्ट भी लिखा जाता है एक इमेज पे, वो भी इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है.
सो वो क्या करते हैं कि एसवीजी इमेजेस होती हैं उनको जस्ट उनके ऊपर रख देते हैं बेसिकली। जैसे ड्राइंग का यही मेनली यही होता है कि हम उसके वैल्यूज को चेंज कर रहे हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। So the question that we now have is, how do we convert a 3D image to a 2D image? So suppose this is a camera obscura and it's from a Danish philosopher drawing. Wait a second. So we have this 3D world that we have outside. And have you guys heard about Pinhole Camera? This is basically an example of Pinhole Camera. So in this Pinhole Camera, what we have is there's a very small dot, small hole from which light rays can come. And what it usually does is it creates an inverted image of the landscape outside. So it's basically a very dark room with a very small hole, and yeah, we can draw. That's how they started using it for drawing real landscapes. So how do we convert a 3D image, 3D, not a 3D image, a 3D world point? सपोज मेरा हाथ है मान लेते हैं, एंड हमने इसको जो इमेज तुम लोगों को दिख रही है वो कैसे कन्वर्ट हो रही है. So what it does is we perform a transform on it mainly, and जो भी इसके पीछे इमेज प्रोसेसिंग का पार्ट होता है वो प्रोजेक्टिव ज्योमेट्री में आता है, एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक टू रीड अबाउट बट रिलेटिवली difficult. And what it can be useful for is camera calibration. Have you guys used chessboards for camera calibrations? I'm not really sure you guys would have used. I think only second or third year people would have used. So in that checkerboard, we mainly use camera projective geometry only to solve these problems of calibration, which is used to get the focal length of a camera and all those other things that we have, the skew values and the rotational and translational vectors. Next, moving on to the next part that we have is, अब हमारे पास RGB इमेजेस भी होगी, अब ग्रे स्केल इमेजेस भी होंगी. कई बार ऐसा होता है कि हमें RGB से ग्रे स्केल में कन्वर्ट करना पड़ता है. क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि RGB में भी उतनी डिटेल्स हैं और ग्रे स्केल में भी उतनी डिटेल्स हैं, एंड जो हमारा सिस्टम है, जो आगे सिस्टम है, वो एक्सेप्ट ही ग्रे स्केल इमेज करता है. So we need a method for conversion from RGB to grayscale. So if you think about it, a common solution to this problem could be what? जो हमारे पिक्सल्स हमारे पास जो 3 एरेज हैं उनका मीन निकाल लो. So जो हर पिक्सल है उसकी 3 वैल्यूज हैं, so उनका हम मीन कर सकते हैं. But the problem with that is कि हमारा जो परसेप्चुअल सिस्टम है जैसे हम देखते हैं is very different from meaning things out just. So वो बहुत pointless हो जाता है. So हम एक formula use करते हैं, this particular formula जिसके which is basically a weighted sum, and this gives us a better hint into the structure of the landscape rather than just mean the RGB values. एक बार करके देखना, it looks very stupid and just doesn't work out. I've tried it using this mean करके देखते हैं and it doesn't work. It looks ridiculous almost. Next we have is the spatial transformations that we have. So suppose we have this image and अभी हमारे पास बहुत सारे functions हैं यहाँ. रोटेट कर लिया हमने, ठीक है. अब रोटेशन कैसे हो रही है? Do you guys have any idea? How do they do this rotation part? So basically mainly spatial transformation, जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस होगी वो बेसिकली हम एरेज की ट्रांसफॉर्मेशन से ही पिक कर सकते हैं. सो अब इसका क्या रोटेशन का क्या हो सकता है? हाउ डू वी कैन एक्सप्लेन इट कि जो टॉप पॉइंट है हमारे पास, अब हमें जो ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है वो क्या कर रही है कि जो ये वाला जो हमारे पास टॉप मोस्ट पॉइंट है वो इसको इस सपोज वी वांट टू रोटेट इट टू दिस डायरेक्शन, clockwise direction. So it replaces these points by a 90-degree angle basically. And then we have the flipping option that we have
flip the horizontally, what it does is basically change the x coordinates. जो सबसे आगे वाला है वो सबसे पीछे चला जाता है, एंड सबसे पीछे वाला सबसे आगे आ जाता है. सो हम बेसिकली क्या करते हैं कि एक फोर लूप होता है, वो आगे की साइड से आ रहा होता है, एक फोर लूप पीछे की साइड से आ रहा होता है, वो स्वैप करते जाते हैं वैल्यूज को. सिमिलरली वर्टिकल का भी है. वर्टिकल में भी ऊपर से एक फोर लूप आ रहा होता है, नीचे से फोर लूप आ रहा था, वो चेंज करते जाता है. देन वी हैव रीसाइजिंग की प्रॉब्लम. रीसाइजिंग एंड रीस्केलिंग ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं. रीस्केलिंग हो गया, रीसाइजिंग में हम एक पर्टिकुलर साइज पे जा सकते हैं. सो सपोज ये इमेज हमारी 100x100 है, तो हम रीसाइजिंग में 100x50 भी जा सकते हैं. सो एक सेकेंड, इसमें रीस्केल हो रहा है ना कि रीसाइज हो रहा है. वेट अ सेकंड, इसमें रीस्केल हो रहा है, रीसाइज नहीं हो रहा. सो ये रीस्केलिंग का एग्जांपल है रादर देन रीसाइजिंग. एंड इफ आई डू दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रीसाइजिंग. रीस्केलिंग कैसे हो रही है? तो मैंने ये कर दिया. अब ये इस चीज को करेगा कैसे? बेसिकली इसमें क्या करता है, मेनली जो मीन होता है, एक अगर हम इसे एकदम रीस्केल करने की कोशिश करें तो वो क्या करता है, हर विसिनिटी में हर नेबर पे जाता है एंड उनके मीन्स निकालता है. सो जो मोस्ट कॉमन मीन है उसको पिक करता है एंड उसे इमेज में रखता है. सपोज हमने इसको बहुत छोटा कर दिया, तो वो क्या करेगा, एंड जो वाले इस ये वाला पार्ट है हमारे पास, उसका जो मीन होगा उसको रिप्लेस कर देगा. सो सपोज वी हैव 4 वैल्यूज दैट वी हैव, उसको ट्रांसफॉर्म करके जस्ट सिंगल वैल्यू बना देगा, या तो मीडियन के थ्रू बना देगा या फिर मीन के थ्रू बना देगा. देन वी हैव क्रॉपिंग. क्रॉपिंग बेसिकली इंडेक्सिंग हो जाती है. सो सपोज क्रॉपिंग क्या करनी है हमने, लेट्स क्रॉप दिस इमेज. ओके, सो क्रॉप हो गया. सो अब क्रॉपिंग में हो क्या रहा है मेनली, तो हमारी एरे थी 100x100. सो हमने विड्थ वाला पार्ट को हमने 50% रिड्यूस करना है. तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली इंडेक्स कर रहे हैं, और इंडेक्स कर रहे हैं, स्लाइसिंग कर रहे हैं. जैसा भी तुमने समझा, इसे 2D एरे है हमारे पास. सो हमने एक रेंज डिफाइन कर दी कि हमें यहाँ से यहाँ तक का ही डेटा चाहिए, और वो बाकी डेटा डिलीट हो जाता है. एक्चुअली इन सिस्टम्स में नहीं डिलीट करते, बेसिकली इन डिटेल्स को स्टोर रखते हैं. बट या basically cropping का purpose, cropping is just indexing only. So next thing I want to talk about is padding. So suppose we have an image. अब हम इसकी padding करना चाहते हैं. Padding का option, where is the padding option that we have? Okay, let's leave it. So image है, हम इसके अराउंड एक बाउंड्री बनाना चाहते हैं ब्लैक कलर की. वो कैसे बनाएंगे हम लोग? उसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, इसके एरिया जो हमारी इमेज है, मेन इमेज, उसके अराउंड हम क्या करेंगे, एक एम्प्टी एरेस बनाना स्टार्ट करेंगे. ऊपर वाले पार्ट है, यहाँ भी हमने एक एम्प्टी एरे बनाई, मतलब इस पे कंकैटेनेशन होगा. बेसिकली इसके साइड में एक लेयर बना दी 0 की. देन उसके बाद हम उसकी बेसिकली रिप्लेसमेंट करेंगे डिपेंडिंग ऑन कौन सा कलर हमें चाहिए. ठीक है. Then we have, how do you detect hands? So we have a hand in the image, in this image. अभी मेरा face है इसमें, I'm not sure गायब हो रहा है, but मान लेते हैं मेरा face नहीं है इसमें, and मेरा hand है आता है हमारे पास. So हम इसमें mainly सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम skin color को detect करेंगे. ठीक है. So फिर उसके बाद हम क्या करना चाहेंगे कि हम इसकी region of interest पिक करना चाहेंगे. सो इस मेथड में हम कॉन्वेक्सिटी डिफेक्ट्स का यूज़ कर रहे हैं. एंड अब मैं बताता हूँ कॉन्वेक्सिटी डिफेक्ट्स क्या है. पहले हम देखते हैं कॉन्वेक्स हल क्या है एंड व्हाट इज कंटोर्स. देन आई एक्सप्लेन व्हाट इज कॉन्वेक्सिटी डिफेक्ट्स. सो वी हैव दिस इमेज एंड वी आर एबल टू फाइंड समथिंग ऑफ दिस काइंड. हमारे पास ये आ जाता है कि आफ्टर थ्रेशहोल्डिंग द होल रीजन. सो फिर हम क्या करना चाहते हैं कि एक बाउंड्री ढूंढना चाहते हैं कि ये एंड पॉइंट्स कहाँ हैं इसके. सो कॉन्वेक्स सेल में कैसे कर रहे हैं इसे. सो हमारे पास इन पॉइंट्स की वैल्यू है कि मतलब ये जो जहाँ वाइट एंड पॉइंट्स हैं
सो हमारे पास इनकी वैल्यूज है हमारे पास अवेलेबल फ्रॉम दिस कंटोर्स पार्ट, कि हमें पता लग रहा है कि वो बाउंड्री कहाँ है पूरी की पूरी. देन वी वांट टू फाइंड इज कि वो कट पॉइंट्स क्या है, कि मतलब बिल्कुल अगर उसे एनक्लोज करना है तो वो कहाँ से मिलेंगे हमें. वो हम एक कॉन्वेक्स हल से मिलते हैं. एंड कॉन्वेक्स हल कैसे वर्क करता है. सो सपोज एक एल्गोरिथमिक ग्राम स्कैन व्हिच इज मेनली इम्प्लीमेंटेड इन ऑल दीज लाइब्रेरीज. सारी लाइब्रेरीज ग्राम स्कैन यूज करते हैं. सो वो क्या करते हैं, जो हमारे पास ये डेटा है वाइट वाला, इसमें सबसे लोअर पॉइंट ढूंढते हैं. ठीक है, फिर हम उन कलर्स को पोलर एंगल के अकॉर्डिंग उन्हें सॉर्ट करते हैं बेसिकली. तो वो क्या कर रहा है, यहाँ से हमने सपोज ये वाला पॉइंट है हमारा एंड पॉइंट, यहाँ से हमने स्टार्ट किया. सो वो क्या करना चाहते हैं कि हम एक पॉइंट ढूंढना चाहते हैं जो सबसे लोएस्ट पोलर एंगल का है. सो दैट कुड बी दिस पॉइंट और दिस पॉइंट. देन लेट्स से इट चूजेस दिस पॉइंट, जो सबसे लोएस्ट पॉइंट इसको मिल रहा है. सो ये वाले पॉइंट से हमने स्टार्ट किया. हमारे पास और कौन से पॉइंट्स थे, एक ये पॉइंट है हमारे पास, एक ये पॉइंट है जिनका पोलर एंगल लो है काफ़ी ज़्यादा. बट सो हम ये वाला पॉइंट पिक कर लेते हैं. अब इस पॉइंट के बाद हमारा लोएस्ट पोलर एंगल कहाँ आता है, वो इस पॉइंट पे आता है. मतलब पोलर एंगल इन द सेंस कि हैंड की डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में सबसे लोएस्ट पॉइंट कहाँ है हमारे पास. देन वी हैव द नेक्स्ट पार्ट, जो मतलब आउटर बाउंड्री को ढूंढने का यही मेथड है कि जो लोएस्ट पोलर एंगल है वो ढूंढ रहे हैं हम लोग. सो हम इसकी आउटर बाउंड्री ढूंढ लेते हैं. देन व्हाट वी डू इज फाइंड द कंटोर्स ऑफ दिस. कंटोर्स क्या है कि जो आउटर बाउंड्री है, बट आउटर बाउंड्री कन्वेक्स हल वाली इज डिफरेंट फ्रॉम कंटोर्स बिकॉज it's convex hull is basically the enclosing shape. Contours is the boundary only. Then what we want to do is कि हमारे पास इसमें एक स्पेशल पॉइंट ये आ जाता है कि हमारे पास कंटोर्स हैं, देन वी हैव कॉन्वेक्स हल, देन इन दैट इमेज वी हैव दिस कॉन्वेक्सिटी डिफेक्ट. जो ये वैल्यूज हैं हैंड में, दे आर कॉल्ड कॉन्वेक्सिटी डिफेक्ट्स. सो इफ यू थिंक अबाउट इट, सो हम इन वैल्यूज के बेसिस पे जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं एक हैंड में, हम उनके बेसिस पे ये जज कर सकते हैं कि हमारे हैंड ये जज कर सकते हैं कि उसमें अभी नंबर कौन सा चल रहा है. ठीक है, so suppose we have this like 2, there is only one convexity defect in it, so we can say it's 2. If we have 3, we have like 2 convexity defects, so we can say it's 3. It has 2 convexity defects, so we can say it's 3, and like so and so. The next is the problem of how to fix noise. So this whole field of noise creation and removal is very useful in medical analysis and image restoration. So how do we create noise? So मेरी image जो तुम्हारे पास जा रही है उस या फिर जो तुम्हें स्क्रीन पे दिख रही है, which is a very popular image processing image that is commonly used as a test image in publications. So what we can, जो हमारे पास ओरिजिनल इमेज है, हम इसको डिस्टोर्ट कैसे कर सकते हैं. सो हमारे पास एक 2D एरे है, तो हम उसकी जो हर वैल्यू है उसमें रैंडमली पिक करके वाइट एंड ब्लैक डाल रहे हैं बेसिकली. सो सपोज वी हैव दिस पर्टिकुलर पॉइंट हेयर, एंड व्हाट वी डू इज, इवन दो मतलब वो स्मूथ था पॉइंट पहले, एंड उसमें मतलब वो मैच कर रहा था बाकी आसपास के पॉइंट से. सो हमने आउट ऑफ सडन उसमें जो एक ग्रे कलर था उसे हमने वाइट बना दिया, एंड सिमिलरली कोई और पॉइंट को ब्लैक बना दिया. That will be considered as a noise. And noise image में जैसे तुम्हें दिख रहा होगा कहीं white marks हैं, कुछ black marks हैं. So अब ये जो इस टाइप की noise को हम salt and pepper कहते हैं. And अब इससे removal कैसे करेंगे हम इस टाइप की noise को. So a simple method could be कि एक विंडो एक फिल्टर बनाते हैं जो क्या करता है कि पूरी इमेज पे गो थ्रू करेगा एंड जो मीन वैल्यूज है उनको पिक करेगा. सो क्या करेगा, सो सपोज वी हैव दिस रीजन, स्मॉल रीजन वाला एक विंडो है हमारे पास. सो वो क्या कर रहा है, एक मीन वैल्यू ढूंढ रहा है, एंड जितनी भी वैल्यूज हैं उसमें जो बिल्कुल ही आउटलायर में है कि मतलब 1 है बिल्कुल या 0 है, उनको स्मूथ आउट कर रहा है. ठीक है, या
This is the how normally denoising is done by either mean out करना, मीन निकाल रहे हैं वैल्यू का एंड हम उसे चेंज कर रहे हैं, और वी कैन मीडियन के बेसिस पे फाइंड आउट कर सकते हैं. Next thing that we have is the segmentation problem that we have, and it's like basically the most important part of machine vision or machine learning, deep learning. So जो ड्राइवरलेस कार्स हैं वो भी क्या करना ड्राइवरलेस कार्स वो क्या करना चाहते हैं कि जो हमारे पास रीजन है सामने वाला, हम उसे सेगमेंट कर पाएं डिपेंडिंग ऑन इट्स फीचर्स. सो इस इमेज में मेनली इम्पोर्टेंट क्या क्या है? इस इमेज में मेनली इम्पोर्टेंट ये है कि एक तो स्काई है पीछे, फिर एक ग्रास है, फिर एक घोड़ा है. सो हम इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं इमेज को. ठीक है. सो थिंक अबाउट अ वे हाउ वी कैन डू इट. सो वी हैव इंफॉर्मेशन कि हमें 3 डिफरेंट सेगमेंट्स चाहिए, जिसमें हम स्काई को हम एक कलर दे सकें, हॉर्स को एक कलर दे सकें और सेगमेंट को एक कलर दे सकें. So think about how we can solve this problem. So what we can do is think of this image as a graph. So it's basically a mesh. So जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है और उसके राइट में है, लेफ्ट में, वो सारे पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड और एक मैश बन रहा है पूरा पूरा. एंड डिपेंडिंग ऑन उसके आसपास के पॉइंट्स की क्या वैल्यूज हैं, हम उसे एक टाइप असाइन कर रहे हैं. बेसिकली ग्राफ का रिंग पार्ट हो जाता है. सो जो हमारा टॉप मोस्ट पॉइंट है इस इमेज में क्या है, एक समथिंग लाइक अ वाइट की शेड है. देन वी हैव आसपास में थोड़ी सी समथिंग ब्लूइश शेड भी है, बट इट्स क्लोज इनफ दैट वी कैन से इट कैन बी अ पार्ट ऑफ वन सेगमेंट ओनली. एंड सपोज यहाँ आ जाते हैं हम लोग, इस पॉइंट पे आ जाते हैं, इस पॉइंट पे आ जाते हैं, एंड वी हैव असाइंड ऑल द कलर्स अबव इट कि वन सेगमेंट में है तुम लोग, एंड यहाँ हम चेक कर रहे हैं. सो उसमें क्या होगा कि एक एकदम डिफरेंसेस होंगे कि एक साइड बिल्कुल ही ब्लैक कलर है एंड उससे ऊपर जस्ट वाइट कलर है, तो हम उसे सेम कलर नहीं असाइन कर पाएंगे. सो या दैट्स बेसिकली हाउ वी डू इट. बेसिकली हम पूरी इमेज पे गो थ्रू करते हैं एंड फाइंड आउट कि हम कौन सा कलर उस पर्टिकुलर पिक्सल को असाइन कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन इट्स नेबर्स. This is basically the idea behind the fastest algorithm that we have for this particular purpose. And yeah, that's about it for this particular meet, and thank you. And yeah, I'll add the references later on too, and resources. So abhi So can you please share this PPT? Oh yeah, sure. सब इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि राइट नाउ के लिए अभी के लिए तो ये वाला सेशन इतना ही चलेगा. कलर कैलिब्रेशन के लिए जो भी यूज होता है एक पैटर्न पेपर. आई एम नॉट श्योर यश व्हाट इट्स कलर कैलिब्रेशन. आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. कैन यू क्लैरिफाई? अभी जितने भी लोग हैं तुम लोग ये बताओ कि हाउ वी वांट टू डू द नेक्स्ट सेशन, कि हमें तुम्हें स्पेसिफिकली ओपन सीवी में ही सीखना है या फिर कोई और फ्रेमवर्क में सीखना है. आई एम प्रीटी हैप्पी विद डूइंग इट इन ओपन सीवी एंड दीज थ्योरी सेशंस विल बी देयर कि द बिगर आइडियाज बिहाइंड ऑल दोज प्रिंसिपल्स दैट वी हैव, एंड ऑफ कोर्स वी नीड अ kind of implementation side, need to discuss the implementation side of things too. But it depends on which framework you want to do. I'm comfortable with all that are available right now. You can type in the chat box. And in the next video, most probably we'll be discussing about image morphology and image filtering. उनका यूज कहाँ आता है कि इमेज में नॉइस रिडक्शन में काम आता है उनका यूज, एंड जो इमेज में इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए काम आता है. सो हम उसका डिस्कशन करेंगे. इमेज फिल्टरिंग एंड इमेज मॉर्फोलॉजी काफ़ी कॉमनली यूज होते हैं मशीन लर्निंग में.
या सो सपोज एक ब्रेन ट्यूमर ढूंढ रहे हैं, उसमें तो बेसिक मॉर्फोलॉजी का पर्पस चल जाता है। ओके, ओपन सीवी में करते हैं, कोई इशू नहीं है। एंड अगर कोई चेंजेस हैं कि मतलब किस तरह तुम चाहते हो कि मैं प्रेजेंट करूं, वो भी बता दो, कोई इशू नहीं है। ओके, या दैट्स अबाउट इट आई थिंक। एंड अगर किसी को और कुछ कोई फीडबैक वाली चीज़ है तो is there a way to contact us guys? Nitin, do we have a contact method in those PClub groups that we have on WhatsApp? Yeah, we have PClub groups on WhatsApp. Okay. So अगर तुम्हारे कुछ सजेशन है तो वो अभी बता दो, और अगर कुछ और सजेशंस हैं कि मतलब कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं हम लोग, वो ईमेल पे बता देना या फिर फोन नंबर पे बता देना if you are not comfortable. एंड पीपीटी शेयर कर दिए। एंड या नेक्स्ट जो डिस्कशन होगा उसमें इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे, हम सारी इम्प्लीमेंटेशन ओपन सी में करेंगे। ओके, आई थिंक वी कैन क्लोज इट। बाय गाइस, हैव अ ग्रेट वीकेंड।